Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the sixth episode of PEP Foundation's Conversations. Promotion of Education in Pakistan Foundation, commonly known as PEP Foundation, is a New York-based public, non-profit, apolitical organization working closely with higher education institutes in Pakistan. I'm Anum Essa, the moderator for today's session and Senior Communications Manager, PEP Foundation. Our topic for today is mental health issues in university students. Before starting the conversation and introducing you to the guests, I would like to talk a bit about the topic itself and share some statistics with you all. According to the World Health Organization, 1 in every 4 individuals suffers from a mental health disorder. Specifically, the youth from 20 to 30 years remains the main victim in this case. Some common problems related to mental health found in population of all ages are depression, anxiety, excessive stress, and bipolar disorder, to name a few. Now, the state of mental health in developing countries like Pakistan is presents a very murky picture. In the last decade or so, the number of college and university students suffering from psychological disorders is on the rise. And according to one of the studies focused on university students of Islamabad, Peshawar, and Rawalpindi, 39% of the students were found with low mood, 36% with anxiety, and 25% with depression. Now, the objective of conducting today's discussion is not only to highlight the problems faced by the students, but also to explore the underlying causes and the role of parents and teachers in addressing such issues. I'll now quickly move on to our guests for today. Our first guest is Mrs. Rakia Ashraf, who is a practicing clinical psychologist and in charge of Adolescent Health Center in Lady Wellington Hospital, Lahore. She's a PhD scholar in Center for Clinical Psychology, University of Punjab. Ms. Rakia also has worked as a research supervisor and visiting lecturer in Punjab University and public sector universities. She has over 6 years of clinical and teaching experience and has supervised several research students. Thank you, Ms. Rakia, for joining us today. Moving on to our next guest, we have with us Dr. Hayat Yousafzai, who is serving as a consultant clinical psychologist and visiting assistant professor at Ziauddin Hospital since 2016. Dr. Yousafzai also happens to be a consultant at Darus Sehat Hospital and Fauji Foundation Hospital. Besides that, Dr. Yousafzai is a PhD fellow at UPM Malaysia. Thank you very much, Dr. Yousafzai, for joining us in the conversation today. And as always, our panel is incomplete without our students. Hence, to represent the student body, we have with us a third-year MBBS student from Karachi, Muskan Kumari. Muskan is a general surgery aspirant, and her interests include public speaking and writing. Thank you very much, Muskan, for being here. Now, now that we are done with the introduction, I will start today's discussion. And my first question would be from Muskan. Muskan, if you could share your experience with me a bit and tell me that how have you, found this high school to university transition, or in your case, this medical college transition? Has that had any positive or negative impact on your mental well-being? If you could please elaborate on that based on your personal experience. Thank you. Thank you, Anum. So it's been 4 years since I graduated from high school and went on to med school afterwards. And while this progress has positive perspectives to it as well, like for example, the capacity to explore things all alone without any precedent and figuring out how to speak with individuals in university who are belonging to different social backgrounds and becoming more professional, I guess, in general as you move forward. But transitioning to university overnight from high school is a cultural shock, a social shock to many, because it's a completely new environment and where you have to unlearn and unpack a lot of things that you previously learned. And so it's a new place, you have to adapt to it really well. And I think personally for me, the first year of university was the most daunting thing, yet I think something that I needed to encounter to be the person who I am today.
So it was overwhelming to experience, I think for many students, since they leave their hometowns, they leave their support systems, and they come into an entirely new place. So it's very daunting, it's very overwhelming, and you have to face new challenges as well, such as living with roommates and managing heavy workloads, because especially in med school, where you have insane amount of studying to do, insane amount of things to handle. So I think that, and you have to develop an independent identity of yourself as well. So this all comes with added anxiety, and I think, including me, a lot of students were fearful. I think they still are, of what to expect and uncertainty, especially during the time of pandemic. And this, I think, combined sense of newness and the lack of clarity, I think it's rather threatening than it is exciting in the first few years. But I think you get used to it after some years in university. Thank you, Ms. Muskan, for the detailed response. Now, heading towards our psychologist in the panel, Ms. Rakia and Dr. Yousafzai, if you two could answer the same question one by one. Now, we are all aware that university life or medical school life has its own set of challenges. In your experience as a clinical psychologist, what are some of the major causes of students' poor mental health, and what do they struggle with mostly? If Ms. Rakia could answer the question first, and then we'd move on to Dr. Yousafzai. Thank you. You need to unmute yourself first, Ms. Rakia. Yeah. Thank you so much, Ms. Anum. Um, Nowadays, currently, if we talk about this very issue, it is actually the need of the hour, because when students get at that transition phase of their lives, like moving from the college life to the university life, they face really hardships, challenges more than ever before. Maybe because, like, the media has grown so much, the world has turned into such a global village. So they have a lot of exposure. In fact, I would say overexposure at very early age. And with that overexposure, there are of course a lot of new challenges and new things they have to confront, and they have to manage. So this thing has become so very important, pertinent in today's era. Just as Muskan has very rightly highlighted, I think the main thing is, like, when you're moving from college life to university life, you're also moving from adolescent age to adulthood age. That is one part that I would usually miss. Like, according to World Health Organization, after 20s, you are turning into adulthood, and adulthood has its own challenges, adding university challenges to it. When you get to adulthood, you have few more responsibilities than the thrills, or in adolescent age you just have imagined, or you might have hypothesized it. When you will be going to university life, there would be a lot of chill type things, and you'll be enjoying roaming around. But when you actually go to enter that life, you actually confront a lot of challenges. And then the same stage which Muskan has highlighted, there's a lot of confusion. The major thing is, I think there is a lot of discrepancy between the expectations a student has before entering to the university life, and what university life actually is. So we need to get clear, and thank you to you and this platform for arranging such talks, so that the students who are going to enter this new life, they can actually presume that what are challenges they are going to face. It's not just a bed of roses, or it's not just a university life, and you are not just getting freedom, but you are getting a lot of responsibilities with that. And managing that needs a lot of troll, plus a lot of guidance, which we usually miss. So hopefully we'll be discussing the role of teachers and parents later. And then there comes the very important thing, that students need to be guided before entering the university life. So many students, like Muskan, they do not face that role confusion thing, identity crisis thing, that they are just pushed into a new golden era, where they do not know, they are just making their own selves they are very uncomfortable, and they are trying to adjust into that new age and era. And plus a lot of issues like bullying, things. Now,
another very important thing, there are many other issues already present highlighted in university life. बहुत दफा ऐसे होता है कि कॉलेज में वो कॉलेज लाइफ तक वो चीजें स्टूडेंट्स में होती हैं, बट बिकॉज ऑफ some less sort of exposure वो चीजें हाईलाइट नहीं होती। जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में आप एंटर होते हो तो सिंस यू हैव a lot a big circle, you are from to a big, you have entered to a C life, so एक बड़ी लाइफ है और उसमें वो सारी आपकी जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स, आपकी वीकनेसेस होती हैं जो कि आपने पहले कभी देखी नहीं होती, they just come into surface. Thank you, Ms. Rakia. Over to you, Dr. Yousafzai, if you could answer the same question. Be on here today. As you know that we all know about the university life, that how university life is and how the school life is. But कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अगर हम देखें कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से वो यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे उनको वो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिल जाती कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में असल प्रोसेस क्या है, क्योंकि स्टूडेंट पहले से एक माइंड बनाया हुआ होता है, वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट चला जाता है। लेकिन जो फर्दर फिर वहाँ पे उनकी जो इश्यूज है, जैसे मैडम राकिया ने कहा और बाकी जो स्टूडेंट ने भी कहा कि वहाँ पे उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पेशावर से आता है वो कराची में पढ़ना शुरू कर देते हैं, या वो सिंध से आता है कराची में, या कराची से इस्लामाबाद जाते हैं, तो वो जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत जो उसके एडजस्टमेंट के लिए जरूरी होती है, उसमें उनके बहुत से साइकोलॉजिकल इशू शुरू हो जाते हैं। तो एज मतलब मतलब जो एक बैलेंस एजुकेशन सिस्टम है हमारे कंट्री का, वो असल में अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज हो सकते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। इफ द बैलेंस एजुकेशन सिस्टम, जैसे कुछ बच्चे जो है वो सिंधी पढ़ लेते हैं, कुछ पश्तो पढ़ लेते हैं, कुछ पंजाबी पढ़ लेते हैं, तो इस वजह से वो उसी चीज को, क्योंकि मैं खुद इस चीज का शिकार था जब कराची में पश्तो और ये ज़बानों में स्टडी कर चुका था, तो मेरे लिए बहुत मसले, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने उसको कवर कर दिया। लेकिन मेरे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वो इस चीज को कवर ना कर चुके और वो इस चीज को आधे में छोड़ के वापस चले गए ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस वाली चीजें। फिर हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में और हमारे स्कूलों में वो काउंसलर्स वाली वैकेंसी अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। तो जब एक काउंसलर कम से कम काउंसिल करे एक यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में, थोड़ी बहुत एक ओवरव्यू भी दे दे किसी बच्चे को, तो मे भी बच्चा बहुत ज्यादा उससे इम्प्रूव कर लेगा और वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होंगे। ज्यादातर जो इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो वो एंजाइटी के होते हैं, और मेन जो इनका है वो एजुकेशनल जो उनका एक वो है मतलब उनका जो सिलेबस होता है उसमें ज्यादा डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो कराची में लोग सिंधी पढ़ते हैं, पेशावर में कोई सिंधी नहीं पढ़ता, फिर यहाँ पे सारे ग्रुप जो होता है वो सिंधियों का होता है, आप एक दो तीन पठान होते हैं, तो वहां पे वो चीज, या पंजाबी में इस तरह से। तो जो कल्चरल चीजें है ना वो एजुकेशन से थोड़ी बहुत हटानी चाहिए स्कूल लेवल तक, मतलब वो दे दे, कॉलेज लेवल पे उसको कम कर दे, और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में आते तो कम से कम स्टूडेंट एक ही जुबान में एक ही हिसाब से बात करे, तो बहुत सी चीजें जो है, बहुत से मेंटल इश्यूज उनके कम हो सकते हैं। Yes, please, Ms. Rakia, if you have something to add to the conversation, please. Just one last point. We are here not looking at very important aspect. That's the career choice issue. I mean, like most of the times what I feel that when students enter to the university life, they just feel in the first semester, in the second semester, they are placed in the wrong, career choice, and they are in the wrong, maybe university setup, career, whatsoever. So I think what is most important that they need to be educated priorly about the career choices so they can make a very deliberate choice, because ज़्यादातर time होता ये है कि वो यूनिवर्सिटी में आके उस environment, उस subject को basically they are unable to digest it, और उसी confusion में they pass a lot of semesters. Even if you are entering into the medical or whatever the field you are choosing, students must be very sure of the choices they are making, and that this is what we call as deliberate decision making at the part of students, जो कि I think college life के end में students को दे देनी चाहिए. Thank you. Yes, please go ahead, Dr. Yousafzai, if you have something to elaborate. अच्छा, जो ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे आजकल, क्योंकि कैरियर काउंसलर्स है ही नहीं स्कूल लाइफ, स्कूल जो स्टडी है उस टाइम पे, तो वहां पे कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रहा स्टूडेंट को। तो जब गाइडेंस नहीं मिल रहा
तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल इशू होंगे जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे। और जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ जाते हैं तो उनकी वो अपनी एक थॉट पैटर्न होती है। अब जब उस थॉट पैटर्न के साथ वो जाते हैं तो मे बी वो वहाँ पे सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उनको वहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू शुरू हो जाते हैं विद द पेस। मतलब जो इनिशियल स्टेज है, अगर उसमें उनको साइकोलॉजिकल इशू शुरू हो जाते हैं तो वो चलते और उनकी पूरी स्टडी जो है वो हो जाती है। Dr. Yousafzai, I think we've lost the connection in the middle. I'm hoping that you are done answering the question. So I'll move on to the next question, which is directed towards Muskan. Muskan, for students who suffer from any sort of like mental health issues, is there any resource like counselor, जैसे कि Dr. Yousafzai और Ms. Rakia ने mention किया, क्या ऐसी कोई काउंसलर की फैसिलिटी होती है जो आपको अवेलेबल हो, और any online course like something that is available to the students to help them out? Unfortunately, I think there is none in, at least at my university premises, because we did have academic counselors to, help with the workload, to make us understand the study habits that we need to incorporate to study medicine in the initial years. But unfortunately, there are none, professional counselors, psychologists, or psychiatrists, especially up until third year, because then you move on to your clinical rotations, and then you can find psychiatrists in your teaching hospital and reach out to them and ask for help. But at least at university premises, there are none of that sort, and there is no, I think, online resource as well to help students. So yeah, it's an added burden, I think, and we really need to, do something about it. Thank you, Muskan. Now, Dr. Yousafzai, Ms. Rakia, आप दोनों ने काउंसलर की अवेलेबिलिटी की बात की, ठीक है? तो अगर उस हवाले से हम बात करें, so what kind of steps you think universities should take in order to help students with such issues? Yes, we talked about counselor and how the provision of counselor is very important in universities and colleges. But apart from that, are there any resources online or offline that you feel that students should have access to in order to deal with such problems? If Dr. Hayat could answer it first, and then we'd move on to Ms. Rakia. Should I start? Yes, please. Okay, thank you. अच्छा, जैसे इस बच्ची ने बात की कि हाँ, क्योंकि मैं खुद जना का भी अभी करंटली स्टूडेंट रह रहा हूँ ना एक कोर्स में, तो मैं देखता हूँ और ज्यादातर जब मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी बन भी जाती है तो वो मुझे अक्सर यही बात करते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई काउंसलर नहीं है। लेकिन सबसे पहले वहाँ पे यूनिवर्सिटी में काउंसलर नहीं होते, लेकिन वहाँ स्टूडेंट गाइड जरूर होते हैं जो स्टूडेंट अफेयर देखते रहते हैं। जो मैं अभी मेरा एक इशू था इजीली इस चीज पे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर एक्सपर्ट को उनके जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं या जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो तो वो इसके लिए एक्सपर्ट होता है। तो ज्यादातर लोगों का स्टूडेंट का वहां पे एक कंसेप्ट रॉन्ग बन जाता है कि हाँ ये मेरा हेल्प कर सकता है, तो वो हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, स्टूडेंट काउंसलर के लिए जो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल वैकेंसी है नहीं, और जब भी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे गया हूँ मैंने बात की है इसके लिए, तो उल्टा अगर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट एडवाइजर्स हैं, तो जब बात कर वो तो या का होता है या मास्टर होता है कि वो जाके स्टूडेंट के इश्यूज को हाईलाइट करे कि हाँ स्टूडेंट को ये इशू हो सकता है फ्यूचर में। क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी है वो आप लोग भी शायद जानते होंगे कि साइकोलॉजी में ज्यादातर कल्चर को डिस्कस किया जाता है, कि कल्चरल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी कल्चर को जानना पड़ता है। ठीक है, तो कहना मेरा ये है कि अगर स्टूडेंट काउंसलर है तो प्लेटफॉर्म जैसे लोगों का है जो पाकिस्तान जो आप लोगों का गए और ऑनलाइन जो स्टूडेंट को कर सकते हैं, जिस अवर यूनिवर्सिटीज में ये चीज शुरू हो गई है आफ्टर लॉन्ग टाइम के लोगों ने इस पे बात की कि नहीं हमें स्टूडेंट काउंसलर चाहिए। जैसे हमारे पास क्लिनिक्स में लोग आ जाते हैं, पेरेंट आ जाते हैं तो कहते हैं स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट काउंसलर नहीं है,
तो हम बाकायदा उनको बोले जी आपका राइट है, आप उनसे जाके पूछ ले, आप उनको बताएं। और वही स्कूल जाके मैंने खुद अपने जो कैरियर है तकरीबन 7-8 साल का, तो इसमें मैंने कम से कम 5-6 स्टूडेंट काउंसलर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में भेजे होंगे, जो उनको वहां पे जॉब मिली होगी और वो वहां पे अपनी जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं। तो मेरा ऑन पे तो इतना मैं कर सकता हूँ कि मेरे पास इतना क्लिनिक्स में लोग आते हैं, क्योंकि हम तो क्लिनिकल काम कर रहे हैं, तो हमारे पास तो डाइवर्स पॉपुलेशन आती है। जो स्कूल के लोग आते हैं तो स्कूल के बच्चों को या स्कूल के प्रिंसिपल्स को हमारे यहाँ वैकेंसीज अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, जो हर कोई बस वन मैन बनता है और मैं सारा शो में चलाऊं। तो इस वजह से स्टूडेंट की जो राइट होती है वो उनको डिलीवर नहीं कर पाते, और वो इस वजह से उनके जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो दिन ब दिन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और एट द एंड वो क्या करता है स्टूडेंट, उनके पास नॉलेज नहीं होता, उसको अपनी वर्थ का पता ही नहीं होता कि मैं क्या हूँ। तो वो उसको प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है कि वो एट द एंड सुसाइडल थॉट्स में शिकार हो जाते हैं। और अभी भी मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं अभी भी 2 फाइल बना चुका हूँ मरीजों के, वो दोनों स्टूडेंट है। तो मुझे इस चीज पे थोड़ा सा वो हो रहा है कि क्यों स्टूडेंट को, और फिर स्टूडेंट मेरे पास आते हुए मुझे कहते हैं कि आपने सर किसी को नहीं बताना, मेरी फैमिली को कुछ नहीं बताना। तो मैं इस चीज पे मुझे थोड़ा सा वो है कि आज हमारे बच्चे इतने इनसिक्योर क्यों हैं, हमारे स्टूडेंट इतने इनसिक्योर क्यों हैं कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं आपने मेरे फैमिली को कुछ नहीं बताना, और उनके इश्यूज डिफरेंट होते हैं। कोई सोचते क्या कोई क्या चाहिए, हमेशा नॉर्मल की तरफ जाते। हमारे स्टूडेंट ज्यादातर जो उनकी होता है, जो थॉट पैटर्न होता है, डिविएट करके यूनिवर्सिटी में हमेशा लेता है, तो ऑटोमेटिकली उनको साइकोलॉजिकल इशू शुरू हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेट फिर यूनिवर्सिटीज में काउंसलर्स नहीं होते, तो एट द एंड स्टूडेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब कुछ देखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफजई। मिस राकिया, अगर आप भी इसी सवाल को प्लीज आंसर करें तो थैंक यू। जी श्योर। अच्छा, there are 2 points to it. Actually, number one, I would agree with the point you all are putting forward, that there are no proper counselors or even vacancies ही नहीं है universities, colleges में, so there aren't any services available. Plus, moreover, there are no emergency psychological services available, जो कि मुझे जिसकी बहुत कमी है, because you know कई दफे से हुआ कोई रेफरेंस में जानने वालों में रात को midnight 11-12-1 बजे and suddenly I get calls और पता चलता है कि the person is getting this suicidal या फिर psychosis के symptoms आ रहे हैं और family is not able to handle them, तो फौरन से क्या करना है। तो ना तो कोई regular services है और ना कोई emergency services है। अगर आपको कोई medical issue होता है तो you have to call 1112 या जो भी आपने health care services आपके around है, आपने emergency को approach करना। psychological services के लिए तो कोई emergency services overall nation level पे established ही नहीं है, number one, और different institutes में भी नहीं है। Okay, now having said that, my second point is like I think there is also a lack of communication between the community and the stakeholders, the service providers actually. जो psychologists या जो भी community जो services दे रही है उनमें और जो community तक message पहुंचे उनके दरमियान मुझे लगता है gap भी बहुत ज्यादा है। And I think like platforms like these would serve the purpose of lessening the gap, because I think services available हैं, कुछ forums, कुछ platforms हैं जिसपे अगर आप कहीं ना कहीं किसी तरह से आप जा सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी को नहीं पता, यूजुअली लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके, आप किसी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाके यू कैन अप्रोच देयर, वहां पे आपको सर्विसेज अवेलेबल होंगी। और उसके अलावा आप मेडिकल ऑनलाइन बहुत सी सर्विसेज, जैसे आप कह लें कि बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसपे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कॉलर डॉक्टर या डिफरेंट तरह की, जिसपे आपको साइकोलॉजिकल हेल्प भी अवेलेबल होगी। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। मैं अभी एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर में काम कर रही हूँ, तो बेसिकली रिसेंटली देयर वाज अ प्रोजेक्ट जिसमें हम डिफरेंट एज अ गवर्नमेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हम जा रहे हैं, और जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको हम बताते हैं, वो यूजुअली मेरे एरिया के वेयर अबाउट्स में ही कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं जहाँ पे मैं जा रही हूँ इस टाइम, और डिफरेंट लोग जा रहे हैं जो साइकोलॉजिस्ट। जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वी टेल देम दीज आर द सर्विसेज अवेलेबल ओवर देयर, दे डू नॉट नो अबाउट इट, उनको आइडिया ही नहीं है। तो आई थिंक एक तो सर्विसेज नहीं है, ओके, हैविंग सेड दैट सर्विसेज हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है।
So I think there is a need to bridge the gap too. कि services मौजूद हैं, अगर आप regular services आपकी college university में available नहीं है तो चलो emergency services you know आप hospitals में आप clinics में approach कर सकते हैं. और फिर very important thing, इसको जो हम कहते हैं value for money is justified, आपने लोगों को बताना है कि आपकी mental health पे अगर आप पैसे लगा रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, आप एनर्जी लगा रहे हैं, you're taking time out to reach to the professional, so it's worth that. बिकॉज मेंटल हेल्थ की चूंकि वैसे डिमांड नहीं है और लोगों को समझ नहीं आती, इवन पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि बच्चों को लेके जाना क्यों इतना पर्टिनेंट है, तो उसकी वजह से वो इसको कॉम्प्रोमाइज करता है. I mean, they can, students even would prefer buying expensive clothes, branded things, and eating all the junk food things, but they would not. They are very reluctant to spend on their mental health. So I think इसको भी हमें देखने की जरूरत है कि हमें इसको प्रमोट करना है कि जहां पे भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं वहां पे उन पे आप किसी भी तरह से अपना टाइम, मनी इन्वेस्ट, किसी भी तरह से इन्वेस्ट करें. इट्स वर्थ दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू डू नॉट हैव योर मेंटल हेल्थ सिक्योर विद यू, आपके पास जितनी भी चीज, जितनी भी ब्लेसिंग्स हो, यू वोंट बी एबल टू एंजॉय देम. So I think propagating that message is also very important, apart from adding the counselors and other mental health services in different institutes. Thank you, Dr. Ms. Rakia. Now, Muskan, coming back to you, and I'll talk a bit about the exams now and the anxiety that comes with it, right? How do you deal with exam anxiety, and do you feel that the pressure keeps on increasing as you progress in your university, or in your case, your medical college life? Once you enter the college, and once you are about to graduate, how does the pressure increase, and what has your experience been? I think especially I feel like when towards making transition from high school to university, you are expected to become independent learners. Like obviously, like in college or in high school, teachers spoon feed you everything that you're a part of a herd, so you need to learn alongside your peers. But in university, it's a completely different scenario. You need to learn on your own, you need to manage your time on your own, and I think this all comes with added anxiety, especially during the exam season when it's at the peak. And I think when everyone around you seems to be doing extremely well, I think at least they pretend to be doing extremely well, and you end up feeling very inadequate. So I think it's quite a norm that I've seen in my medical school or other medical schools as well. And I think the pressure keeps on increasing. It does not go down as years go by, but I think you get used to it. But there's also this point that even if you get used to it, at a point it comes like you are severely burned out. And I think to prevent that, you really need to take out time for yourself. And I think it's extremely important that even avoiding the stressors leads to more stress. So even if you're not doing good in a class, you should not avoid that class, you should not avoid doing it as assignments, and instead go up to the professor, ask for help, or go attend group sessions, group study sessions, and ask for help there. So I think, and in addition to that, I think I at most try my best to have a good sleep and diet schedule, since I think not getting enough sleep during exams leads to reduced performance on the exam day. And talking to your friends, especially who are not in the same field as you, I think they help elevate your self-confidence and your esteem, and you end up feeling good about yourself, I think. Thank you very much, Muskan. Now, I'll ask another question along the same lines to Dr. Yousafzai and Ms. Rakia. As Muskan mentioned, that of course exams certainly induce a lot of anxiety and stress. If you could talk from a clinical perspective or a technical perspective, what are the mental health issues caused by exams and the pressure of specifically attaining good grades, and how can students cope with that, and how to mitigate such issues at an early stage? Ms. Rakia could go first, and then Dr. Yousafzai could answer the same question. Thank you. Again, a very important question, Ms. Anum, because I've
dealt with a lot of social anxiety cases. Students like कि अगर हम बात करें तो most of them come with these social anxiety concerns, may it be like lack of self-esteem too, lack of confidence, and then fear of evaluation that turns into social anxiety at the end, or the pressure being created on them that they have to perform this way. So सबसे पहले force community level पे उनके parents, teachers, and all over the society is creating a lot of pressure on them, which again creates stressors. When you're talking to me as a clinical psychologist, and I have to answer in that way, I would like to highlight the causal factors behind these social anxiety or these exam stress. Basically, causes, basically अगर हम causes पे बात करेंगे, what are the factors underlying these things, तो वहां से हम उसकी root causes पे जाके फिर हम उसको manage करने पे बात कर सकते हैं. So since childhood we have been raised in a very competitive sort of environment. Cousins से competition, fellows से competition, sibling competition, rivalries, all over. So basically we have a lot of a great sense of this achievement to please others. We need to please others, and our locus of control is always external. हम हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, we are progressing, we are taking marks, and we are doing everything for others, and that leads to a lot of stress itself. और ये चूंकि आपने कहा कि what are the steps we can take since childhood at early level. So I think families को ये overall हमें एक environment ऐसा create करना चाहिए जहाँ पे हम competition की बजाय हम promote करें कि cooperative learning को. और ये as a module कुछ countries वगैरह में, like Finland में अब ये module adapt हुआ है, और Finland was the country जहाँ पे आप education के according बात करें तो वो poorest countries में था, और अब 90% of the population of that country, they are educated up to at least higher secondary level, और they are setting a trademark. क्यों उन्होंने अपनी policies को change किया है? उन्होंने एक competitive environment की बजाय cooperative environment, cooperative learning को policy making तक लेके गए हैं, और फिर जाहिर है वो घरों में, और what they have told that this change of mindset is not about years, it's about decades. So अभी से हम चलेंगे तो फिर हम एक progress पे चलेंगे. We need to tell students that it's all about progress, not perfection. This is what we tell a lot of clients too, कि आप progress पे focus करें, perfection पे focus नहीं करें, so that they can feel more secure of what they are performing. Plus, focus on the individual differences. If a student is unable to perform well in one subject, or in one career choice the student has opted, that doesn't mean that the person is failure as a whole. So the person needs to highlight his or her own strengths, और हमें culture भी promote करना चाहिए जहाँ पे हम लोगों की strengths पे बात करें, लोगों को reinforce करें, positive बात करें कि okay, अब feedback के बारे में भी ये कहा जाता है कि a vulgar feedback is always promoted, कि पहले आप अच्छा feedback दें, दरमियान में आप negative points, and then end with a good feedback. लेकिन usually universities में, colleges में environment नहीं है. We directly start from the criticism sort of thing. Since I've remained engaged in lot of teaching too, or supervisions, so I have seen हम भी जब उस system में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा meticulous हो जाते हैं about the mistakes of students, and we forget encouraging the students, which leads to a lot of added anxiety in the students. So I think एक encouraging sort of environment students के लिए बनना चाहिए. Plus, a very important thing, we need to tell our students how to handle failure. That's very important. ऐसा नहीं हो सकता, you cannot avoid failures in your life. ऐसा नहीं हो सकता कि you'll always succeed, you always get good grades, and you'll always pass with flying colors in whatever the matter of life you are in, not only the professional life. आपको failures आएंगे आपकी life में, आपने उनको handle कैसे करना. सबसे पहले failures are part of life, and they're as okay. जैसे हम कहते हैं कि रोना is part of life, crying, yeah, negative emotions are as okay as the positive ones. You need to be very comfortable with them. जब आप ये feel करना शुरू हो जाते हैं तो जो मुस्कान ने बहुत important point highlight किया कि student avoid करना शुरू हो जाते हैं अपने stressors को, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि okay, I'm gonna feel this way because at the back of the mind I fear being getting failed. And जब उनको ये पता होगा कि उन्होंने अपने उन failures को, उन thoughts को कैसे overcome करना है, तो definitely वो उस पूरी situation को या उन situations को सिर्फ अपनी university life में नहीं, life में जहाँ जहाँ उनको failures आते हैं उनको मजीद अच्छी तरह से handle कर सकें. Thank you, Ms. Rakia, for the elaborate response. Dr. Yousafzai, if you could shed light on the same issue. Okay, thank you. अच्छा, मेरा जो
एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ, तो मैं अक्सर स्टूडेंट को भी ये बात समझाने की कोशिश बड़ा करता हूँ कि जो एग्जामिंग है वो तक पॉजिटिव मतलब अच्छा भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर इफेक्ट करना शुरू करे तो फिर जो आपकी एग्जाम को असल में मेंटल प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन मैं इसमें सिर्फ बच्चे को कसूरवार नहीं समझ रहा हूँ, मैं इनकी असल में पूरी फैमिली को ही कसूरवार समझ रहा हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो या जो उनके रिलेटिव्स है वो कंपैरिजन पे जाते हैं, वो स्टूडेंट को मतलब बचपन से ही उनको उसके अंदर एक कंपटीशन वाला रोल डाल देते हैं। तो कंपटीशन वहां पे ज्यादातर उमूमन हमारे पेरेंट्स तो सारे साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो क्या करते हैं वहां पे कि वो बच्चों में इतना एंजाइटी इंड्यूस कर देते हैं, इतना उनमें वो कंपैरिजन वाला जो एलिमेंट है वो इंड्यूस देते हैं कि अगर वो पॉजिटिव कर रहे हैं ना तो के ऑटोमेटिक माइंड में वो क्रिएट जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अब बात एंजाइटी की तरफ जाते हैं और फिर वो किस तरीके से अपने आप को खत्म करते हैं। और जो बच्चा एग्जाम में एंजाइटी का सोच ही नहीं रहा, जो उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ समझ आ रही है कि हाँ फ्यूचर मेरा इंडिपेंडेंट है, तो वो बच्चा किस तरह से उस प्रोसेस में आगे बढ़ जाता है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, स्टूडेंट को हम टारगेट नहीं कर सकते। जो हमारे पेरेंट्स है उसको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम बच्चे में अगर कंपैरिजन इंड्यूस कर रहे हैं टुवर्ड एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो बच्चा फ्यूचर में जाके एग्जाम एंजाइटी का शिकार हो सकता है और उनके जो ग्रेड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली लोअर पे आना शुरू हो जाएंगे। तो पेरेंट्स का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड में, क्योंकि वो एक हेल्दी डेवलपमेंट करे बच्चे की, ना कि एक कंपेरेटिव डेवलपमेंट करे। जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी अगर यहाँ पे मैं अपने बैठ के अपना कंपैरिजन शुरू करूँ तो मुझे भी थोड़ी बहुत इशू शुरू हो जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इशू जब बढ़ने लग जाते हैं तो फिर प्रोसेस ये होगा कि मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाऊँ। तो ज्यादातर स्टूडेंट में कंपैरिजन की जो डोमेन है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से उसके और ज्यादातर जो नार्सिस्ट बच्चे होते हैं वो इसी सोच में होता है कि नहीं मैंने ग्रेड अच्छे लेने हैं, मेरे ग्रेड अच्छे लेने हैं, तो वो इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो सही से पेपर नहीं कर पाते और फिर उनकी वो अपनी नार्सिस्ट वाली जो फीचर्स होते हैं उसकी वजह से वो और ज्यादा। तो वही और आप अगर स्टेटिस्टिक उठा ले तो जितने भी नार्सिस्ट बच्चे होते हैं उनकी ग्रेड तो या बहुत हाई आते हैं या बहुत जीरो आ जाते हैं, लेकिन जब वो जीरो आ जाते हैं तो वो स्विच कर देते हैं, अपने लाइन को दूसरे लाइन में चलना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में दिखना चाहिए, क्योंकि बच्चे टीचर के पास 5-6 घंटे होते हैं, यूनिवर्सिटी में वो 5-6 घंटे होते हैं, बाकी तकरीबन वो 18 से लेके 20 के घंटों के दरमियान वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। तो कम से कम पेरेंट्स को ये चीज इतना सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे में ये वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा हो रहा है, तो लिहाजा मुझे इस पे वर्क करना है। और हमने मशीन नहीं बनानी, हमने बच्चों से मशीनें नहीं बनवानी, हमने बच्चों से एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनवाना है। वो हम उसको ह्यूमन मशीन नहीं कह सकते कि वो एक ह्यूमन मशीन है, क्योंकि मशीन में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन बच्चे में अगर हम कंपैरिजन का एलिमेंट डालना शुरू करें तो फिर बच्चा चेंज नहीं हो सकता। और बच्चे का वही चीज उसके प्रोफेशनल लाइफ में, फिर उसकी फैमिली लाइफ में, फिर उसकी मैरिटल लाइफ में, तो सारों में उनको इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड वो एक लाइफ में अपने आप को वर्थलेस, होपलेसनेस और इन चीजों का शिकार हो जाता है, एंग्शियस होना शुरू हो जाता है, ज्यादातर पैरानॉइड। जैसे मेरे पास ज्यादातर जो क्लाइंट आते हैं तो वो पैरानॉइड अगर हैं तो उसकी जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं कि मेरे अब्बा मुझे कहते था कि फलाना से ग्रेड का। जब मैं उनकी स्कूल हिस्ट्री देता हूँ तो वो मुझे यही चीजें बताते हैं कि मेरा अब्बा हमेशा मुझे कंपेयर करता है, हालांकि वो बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं लेकिन फिर भी उनको वो पैरानोया वाला जो टेंडेंसीज होती है वो उसमें क्लियर होना मतलब नजर आते हैं। तो ये चीज है कि पेरेंट्स इस चीज का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतना होना चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ चले जाए और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारे। तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो कभी भी किसी भी स्टेज पे एग्जाम या कोई भी एंजाइटी का शिकार हो जाए। Thank you very much for your response. Muskan, now coming towards you. We've talked about academic affairs, we've talked about exams and the pressure of getting good grades. Apart from all of this and the academic aspect of the college or this university life, what are some of the other stresses that induce or cause anxiety or depression among students like yourself?
if you could talk a bit about, let's say, peer pressure and other perhaps cultural or social factors that cause such mental health issues in students, or perhaps you've seen, some cases in your friends, or even yourself, if you've suffered from something of that sort, please do share it with us. Sure. I think the first thing, aside from exams and academics, that students have to struggle with is, finding the right support system in university. And most often than not, we do not have that, like especially through the initial years of university. So I think not finding like-minded people during the initial years, it really makes it hard for you to adapt to that place. And it's because it's hard to fight, loneliness and simultaneously be high functioning, because that's a requirement in medical school. Like, you need to be on your A game all the time, and it can't happen if you do not have people who share the same mind as you. So I think that thing as well. And I think another thing that I think is least talked about in our society is managing finances as a student, because as you grow up and you enter your 20s, you no longer want to ask your parents for money. And I think a lot of students alongside me, we work part-time jobs, and we are in fear of being judged by people, because like, even though we come from good families, people would still judge us, like, why do you need to work? So I think but to get that sense of independence, to get that sense of being in a practical setting, students work part-time and they earn their own money, at least to manage their finances through university. So I think that adds a lot of pressure as well, because in fear of being judged. And I think navigating friendships and finances are stressors that peak mental health issues in students. And as well as peer pressure as well. It's I think in med school, it's insane how easily influenced we are by our peers, and how we see them like doing extremely well while we might not be. So that's a huge anxiety inducer. Yeah. Thank you, Muskan. Now over to Dr. Yousafzai and Ms. Rakia. We've previously talked about the cultural barriers and, perhaps the change of environment. If a student is coming from a different city altogether, he or she might end up feeling alien in a new environment. There's another aspect to it, which is when students who come from all girls or all boys colleges, they often take some time to adjust into the university life. While such situation could be very beneficial in terms of a healthy competition, it also leads to added peer pressure. And how do you think students should deal with that kind of pressure? If Dr. Yousafzai could answer the question first, and then we'll move on to Ms. Rakia. ओके, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैं खुद जो है ना वो मतलब मेरा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था, तो मैंने तकरीबन यूनिवर्सिटी तक मैंने बॉयज स्कूल में पढ़ा था। मैंने कभी लड़की के साथ सलाम मतलब अपने बहनों के अलावा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट को मसला होता है, ठीक है, और मैं खुद इसका शिकार भी हूँ। लेकिन वहां पे अगर आपके जो कुलीग है वो आपको, या जो आपके क्लासमेट्स है वो आपको सही मिल जाए, तो फिर आप बड़े मतलब एक प्रोसेस कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत से, क्योंकि हम साइकोलॉजी में, जब मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे क्लास में 3 के 4 बच्चे थे, हम लड़कियां, और बाकी 47-46 के लगभग जो थे वो लड़कियां थी। तो बड़ा ज्यादा मसला था। और फिर मेरा एक दोस्त था, तो उन्होंने तो आधे में छोड़ दिया और चला गया, कहने लगा कि मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, और जो मेरे बाकी दोस्त थे तो हमने पढ़ना शुरू किया और आगे बढ़े। वाकई बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब कोई बच्चा लड़कियों के स्कूलों में नहीं पढ़ा हो या कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा होता, वो डायरेक्ट आ जाता है, तो वहां पे कंपटीशन हेल्दी नहीं होती। अगर 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं और 46-45 लड़कियां हैं, 47, तो मतलब वहां पे कंपटीशन हेल्दी नहीं। एक तो आप चलो हेल्दी कर लेते हैं, फिर जो वहां पे इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट आपको हेल्दी की तरफ नहीं छोड़ना चाहते। वो इन्वायरमेंट आपको इतना एंशियस करता है, इतना आपको प्रेशर में लेकर आते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस 0 पे चला जाता है। और ऑटोमेटिकली हम पाकिस्तानियों में, अगर आप लोगों ने भी ये कहावत सुनी होगी और बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल भी करके, लड़के नहीं रोते, ठीक है, तो मतलब लड़का भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो उसके भी तो इमोशंस हैं, उसके भी तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो इस वजह से वहां पे जो कोई एजुकेशन में
अगर वो अपनी फीलिंग्स या कुछ भी ऐसे शेयर करते तो बाकी हॉस्टल्स और इनमें उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी दोस्त उनको बता देते कि हाँ ये था वो था इस तरह से, और तुम लड़कियों के साथ अपने मसले डिस्कस कर रहे हो, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहां तो हेल्दी कंपटीशन का बहुत मुश्किल है कि वो कर ले। हाँ, अगर कोई पेरेंट्स, अगेन मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को मतलब लड़का और लड़की दोनों इक्वल दिखाना शुरू करे कि मतलब भाई ये दोनों एक ही है, दोनों इंसान है, तो फिर वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है और वो बच्चे को कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो सारे जितने भी क्लास फेलोज होते हैं उनको बड़े पॉजिटिव लेता है। लेकिन वहाँ हॉस्टल में तो हर तरह के लोग होते हैं। अब अगर 400 बच्चे एक जगह हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उसमें हर तरह का बच्चा होता है। किसी की सोच नेगेटिव हो सकती है, किसी की पॉजिटिव हो सकती है, किसी की कोई सोच ही नहीं हो सकती, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी लाइफ में अर्ली स्टेजेस में जब बच्चा आ जाए तो वैसे भी स्ट्रेस का शिकार होता है, और ऊपर से आप 46 लड़कियों के साथ पढ़ना शुरू करे तो आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में मैं फिर अगर पेरेंट्स के बाद फिर मैं टीचर को लेना चाहता हूँ। ये कर रहा है कि वह ऐसे डिपार्टमेंट की रेशो कम है, की रेशो जैसे कम होती है लड़कों, जो उनको पता है कि हाँ इन जो क्वांटिटी है वो कम है, उस बच्चे को स्पेशल गाइड करना चाहिए और उनको इस चीज पे रागिब करना चाहिए, उसको इस चीज की तरफ मजबूर करना चाहिए कि नहीं बच्चे आपने पॉजिटिव यहाँ पे सोचना है, आपने पॉजिटिव कंपटीशन करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो अनलकी या अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ये सपोर्ट बिल्कुल कम मिलता है। मैं खुद इसका शिकार हूँ। मेरे टीचर मुझे कह देते के साथ ना घूमो फिरो, उसके घूमो फिरो, मतलब नेगेटिविटी क्रिएट, और उस बेस पे फर्दर जाके इंसान की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, और मेरे ग्रेड वाकई अगर मैं अपना ग्रेड्स दिखाऊं आप लोगों को तो मेरे ग्रेड्स बड़े कमजोर थे मास्टर में, लेकिन फिर फर्दर जाके मेरे ग्रेड्स अच्छे बन गए हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो एक स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा स्ट्रेस, तो इन स्ट्रेस के बेस पे परफॉर्मेंस बड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली कि उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव मतलब एक कंपटीशन की तरफ किया हुआ है। मेरा अब्बू, मैं आज भी बोलता हूँ लोगों को कि मैं अपने अब्बू का बहुत ज्यादा मतलब करता हूँ, मैं उनकी एक दुआ स्पेशल करता हूँ दुआओं में, क्योंकि उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है ना, वो शायद बहुत कम पेरेंट्स करते हैं। बहुत लकी वो बच्चे होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको कम से कम पॉजिटिव सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो ये चाह रहे एज अ पेरेंट्स, अगर मेरे भी आज बच्चे हैं तो मैं सिर्फ ये चाह हाँ स्कूल भेजो, कोई मसला नहीं है। मेरा अब्बू बाकायदा मेरे साथ बैठ के मुझे बताता था जब भी मैं आता था यूनिवर्सिटी से कि नहीं बेटा ये करना है, ये करना है, इस तरह। तो एक हेल्दी कंपटीशन था और हमेशा मुझे हेल्दी चीजों की तरफ लेकर आते थे, ना कि निगेटिविटी की तरफ। हमेशा कहते हैं लेट इट गो, जो हो रहा है बस सही है, आपने अपनी चीज पे फोकस करना है। आज हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मतलब जब मैं सोसाइटी में देखता हूँ तो पेरेंट्स बाकायदा कंपटीटर बन रहे हैं खुद अपने बच्चे के लिए, क्या आपने किया क्या मेरे लिए। तो ये तो फिर पेरेंट्स वाला रिलेशनशिप, फिर यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के साथ वो क्या करते हैं वो भी आप लोग जानते हैं। थैंक यू डॉक्टर यूसुफजई। मिस राकिया, अगर आप इसी क्वेश्चन को प्लीज आंसर करें तो। जी वेरी शॉर्टली, नंबर वन, बिल्कुल जैसे डॉक्टर यूसुफ ने बिल्कुल सही बताया, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए कि बेसिकली फैमिली का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। हमारी सोसाइटी में ओवरऑल जेंडर को एक बहुत ही टैबूड और स्टिग्मेटाइज और बहुत अलार्मिंग टर्म के तौर पर लिया जाता है। आई मीन लाइक व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल्स, मोस्टली इट्स लाइक टेकन एज a thing which is taken very seriously, in fact overly seriously, या उस चीज को हम normative normal नहीं समझते। but when you have to compete in the society, in the of course अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं और आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते मिलते हैं तो आप मेल्स और फीमेल्स से at the same time you are competing with them, you're dealing with them, और there is no difference। but initially और शुरू से ही हमें ये सिखाया नहीं जाता कि बेसिकली जैसे हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट किया कि लड़का हो या लड़की हो, इट्स द सेम थिंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और आपके क्लास फेलोज हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमारी वैल्यूज पे काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than classifying a person as a male or a female. It's important that you classify the person as a human being, as class fellow, the person you need to help, to get help and to provide help, उसको as a you know आप normalize करना बहुत जरूरी है। अब जैसे उन्होंने बात की कि कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंस ज्यादा होती है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कुछ फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ फीमेल डोमिनेंस ज्यादा होती है, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये ज्यादा हो जाता है। ईदर मेल्स आर गेटिंग, लाइक आई नो इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी, तो मेरे मैं मेल
यूजुअली माइनॉरिटी में होते थे, तो उनको दे आर बीइंग ओवर डोमिनेटेड, उनको ज्यादा कभी कभी वो भी दिया जाता था, दे आर बीइंग ओवर प्रिविलेज्ड या दे आर बीइंग अंडर प्रिविलेज्ड एट द सेम टाइम. सो आई थिंक ये मैनेज करना टीचर का, पेरेंट्स का, इन सब का काम है ओवरऑल. एंड देन आपका अपना सेल्फ एस्टीम प्रॉपर होना, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो योर बाउंड्रीज. आपको बताना चाहिए कि आपकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, आपके सेट ऑफ सिस्टम क्या है. दैट वी टर्म एज नोइंग योरसेल्फ एंड नोइंग योर वैल्यूज, योर ओन सेल्फ. आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, वीकनेसेस ये हैं. वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम सारा टाइम, या तो इफ वी डू नॉट नो दैट वी आर बीइंग बुलेड एट टाइम्स, यूनिवर्सिटी में स्पेशली स्टूडेंट्स जब फॉरन आते हैं, या उनको क्रिटिसिज्म या दे फेस हार्श लुक्स, स्पेशली अगर ऑपोजिट जेंडर की तरफ से हैं, तो फिर तो बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी और इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. सो वंस यू नो योर ओन सेल्फ, योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स, एंड वंस यू नो हाउ टू हैंडल अगेन क्रिटिसिज्म, हाउ टू टेक दैट क्रिटिसिज्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. देन इट्स इंपॉर्टेंट कि मैसेज जो है हमेशा राइट चैनल से कम्युनिकेट हो. अगर टीचर्स, पेरेंट्स सही तरह से बता देंगे कि बेसिकली हर जेंडर का क्या रोल है, किस तरह से लेके चल रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन पहुंचे. स्टूडेंट्स आर बीइंग मिसगाइडेड फ्रॉम द पीयर्स यूजुअली, या फेलोज, या फिर मीडिया के में डिफरेंट चीजें देख देख के, और वो मिसगाइडेंस से ज्यादा प्रॉब्लम होता है. सो एक टैबू समझा जाता है कि इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी, लड़के का क्या रोल है, लड़के ने क्या करना है, लड़कियों का क्या रोल है, बात ना करने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है. आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट अबाउट opposite gender and the values, the challenges, so that the person can feel encapsulated and strengthened to face the challenges regarding the opposite gender thing if the person is new to that system. Thank you, Ms. Rakia. Now moving on towards the final set of questions. Muskan, the last question from you basically is, here I would like to talk about the role of your social circle, including your friends, your parents, and your teachers. How important of a role does your family and do your family and your friends play in your mental well-being, and how do they respond specifically when you're feeling low for any reason? If you could share your personal experience. Sure, Anum. I think I'm very fortunate to have found a great support system in university as well as like at home. Although I would really like to add, that I was able to find these friends after a lot of time, after a lot of years went by in university. It does not happen right away, and I think that like stresses people out in university as soon as they enter, because like we don't have friends, like 2 months have gone by, we don't have friends. But it does not happen right away. And even if you find friends in the initial years, they're not your friends until the end. Like misunderstandings happen and you break off and everything. But when you find these right people, it's worth it in the end. So it's okay to not have found friends right away. It takes a lot of time. However, if I talk about my friends, I think they always show genuine concern when I'm not feeling my best, and they most importantly are ready to hear to what I have to say. I think being heard, even if they can't help, being heard is better than nothing. And at home as well, if my parents see me in distress, or I'm concerned about something, they try to come up to me and share, or like want me to open up to them and talk about how I'm feeling. So I think it's a very healthy thing that I think a lot of friends, a lot of parents need to understand and help their kids out. I think that is better than nothing, just not sharing or not opening up at all. Thank you, Muskan. Now the last question from Dr. Yousafzai and Ms. Rakia. How can, and I would really like you to discuss it like in 1, 2, 3, like how can students, teachers and parents help them if they see them going through a tough phase, and what are some of the pointers that teachers and parents should keep in mind while helping out? If you could elaborate, share some tips with us or some pointers for the parents and the teachers as well. Dr. Hayat, if you could answer first, and Ms. Rakia will then conclude with you. Thank you. Thank you. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जैसे पेरेंट्स और टीचर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट को जब टफ फेज में देखा जाए, ठीक है. और मेरे तरफ से एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे ये पॉइंट्स है कि अपने बच्चों के साथ एज अ पेरेंट्स
आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट करना है। और अभी भी अगर हमारे सेशन पे इस वक्त कोई भी पेरेंट्स है तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि कंपैरिजन ना करें बच्चों में, ना बच्चे को कभी कंपिटिटर बनाए, कि वो कंपिटिटर बनाए लेकिन वो नेगेटिव कंपैरिजन वाले ना बनाए, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस बड़ा लो आ जाना शुरू। हाँ, अब मैं टीचर की तरफ आता हूँ कि टीचर के लिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सारी जिम्मेदारी टीचरों पे डाली जाती है कि टीचर ये नहीं करते, टीचर ये नहीं करते। टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने सब्जेक्ट के मटेरियल को भी सही से डिलीवर कर सके तो होपफुली के कोई भी जो स्टूडेंट होगा उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई मेंटल इलनेस, और वो इनके साथ उनको अपने बच्चों की तरह ले ले। क्योंकि पुराने जमाने में तो बड़े हम कहा करते थे कि टीचर बाप की तरह होते हैं, लेकिन आजकल के जो टीचर्स है उसमें बड़ा डिफरेंस है। आजकल जो टीचर्स है उनमें थोड़ा सा वो जो पता नहीं हमारे मुल्क के हालात ऐसे या पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि फाइनेंशियल ज्यादा हो गए हैं, वो बच्चों को स्पेशल इन चीजों पे लगाए जाते हैं कि नहीं वो स्पेशल ट्यूशन ले ले मुझसे, ट्यूशन की तरफ आ जाए, मैं ट्यूशन पढ़ाऊं, मैं फाइनेंस कमाऊं। तो उनको ये पता नहीं कि मेरा भी बच्चा है। मैं तो अगर अक्सर मेरे पास जब पेशेंट आते हैं स्टूडेंट, और मैं ये सोचूं एज ए इंसान कि यार मैंने इनकी सही हेल्प नहीं की, तो मैं कहता यार मेरे अपने बच्चे शायद फिर फ्यूचर में उनका भी कोई हेल्प ना कर सके इस तरह से। तो मतलब टीचर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उस स्टूडेंट को एक अपने बच्चों की तरह लेना चाहिए, जो अगर उनका कोई भी ऐसा टफ फेस चल रहा हो तो उनको हेल्प करना चाहिए। और बाकायदा जैसे मैंने अभी जो ये कोर्स में कर रहा हूँ जना से, तो उसमें बाकायदा अभी मुझे क्लियर हुआ कि यार व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। ये तो अभी तक जो जो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तकरीबन 32-31 ईयर मेरी एज पहुंच गई है, मैंने सिर्फ हवाई बातें की, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी जो ये कोर्स मैंने 6-7 महीनों का कोर्स पढ़ लिया तो मुझे पता चला कि व्हाट इज द टीचर, व्हाट द टीचर इज, कि मेन टीचर क्या है। लेकिन टीचर हमारे यहाँ क्या है वो अब मैं जब किसी जगह जाऊं और बैठूं तो मैं टीचर होगा कम से कम जो सिलेक्शन होगा वो बड़े अच्छे से कर लूंगा एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे आप किस तरह से स्टूडेंट के लिए एमसीक्यूज बनाते हैं, किस तरह से आप एक एमसीक्यूज पे कितना टाइम लगता है एक टीचर का, लेकिन हमारे यहाँ एक्सेप्ट नो का ऑप्शन दे देते हैं एमसीक्यूज पूरे। तो मैं हमारे जो उनको सोच कि ये मुल्क का फ्यूचर, अगर हम इसके बारे में ना सोचे तो फिर मेरे का फ्यूचर यही बच्चे उनका होगा प्रेजेंट, उनका फ्यूचर के साथ वो खेलेंगे। So this is the viewpoint for teacher and parents from my side. Thank you, Dr. Yousafzai. Over to you, Ms. Rakia. Okay, this very last very important question. मैं overall अगर बात करूँ teachers, और पहले मैं overall बात करती हूँ, फिर मैं pointers पे parents और teachers की separate बात करती हूँ। Overall, I think getting themselves educated, I mean, it's very pertinent for teachers and for parents to get themselves educated. Most of the time उनको खुद पता ही नहीं होता, and of course you cannot pour from an empty vessel. जब उनको खुद नहीं पता दूसरों को कैसे गाइड कर सकेंगे, अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकेंगे? So they need to get themselves educated, updated. बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं फोन पे या ओवरऑल क्या कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट वेरी हेल्दी, बिकॉज आपको एक इस जनरेशन गैप को ओवरकम करना चाहिए कि अब हम if you are born in 60s 70s, you are not living in that era, and unfortunately it's very difficult, but you need to overcome that generational gap so that you can come at par with your children, and then they can feel more confident sharing their issues with you. अब होता क्या है कि आप अगर बच्चे शेयर करना चाहते भी हैं तो पेरेंट्स यूजुअली वो इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सुनना नहीं चाहते, उनको नॉलेज नहीं होता। सो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके दरमियान में गैप क्रिएट हो जाता है, एंड द गैप इज अनफॉर्चुनेटली नॉट फिल्ड बाय वेरी हेल्दी रिसोर्सेज एंड सोर्सेज। सो वो एक प्रॉब्लम मुझे आज की एरा में, आज के जनरेशन में बहुत कॉमन लगता है। देन आई थिंक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, बच्चों का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। और उसका तरीका क्या है? Once they get to know about the children and the students, they would be more easily and happily they would be in the position to identify the changes in their behavioral patterns or their moods or their emotional health. जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे में या आपको लगे कि आपके स्टूडेंट में कुछ चेंज आ रहा है, my child was not like that before, जैसे ये स्टेटमेंट, या my student wasn't like that before, अगर ये स्टेटमेंट आपके माइंड में हिट करे, क्लिक करे, बस वहां पे आप, इसका मतलब है you need to talk about it, you need to seek help maybe at later stage.
Then very important thing, communication. I can't emphasize enough how important it is. You need to communicate, no matter what the topic is, may it be bullying, may it be anything, आपको हर चीज communicate करना बहुत important है. In fact, I have seen many clients जिनके after marriage they face a lot of problems related to their personal intimate life because parents never communicated all that. ये बहुत बड़ी reason है bullying की. और it's very important कि parents और या स्टूडेंट्स और बच्चों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो या वो कम से कम हो. May it be any topic, they need to communicate. Then both teachers and parents need to build resilience in the children and the students. ये बहुत important आजकल इसलिए because I hope you all have noticed आजकल बहुत ज्यादा जल्दी बच्चे कह देते हैं कि we can't handle it, we can't tolerate it, हमसे बर्दाश्त नहीं होता. ये क्या बात हुई, जल्दी बहुत जल्दी tantrums शो करना, गुस्सा आ जाना, क्रिटिसिज्म, चीजें हैंडल नहीं कर पाना. तो ये जो बर्दाश्त की कमी है ना, इसको बेसिकली एट अर्ली एज ही एड्रेस करना चाहिए पेरेंट्स को, फिर टीचर्स को भी, कि उनमें रेजिलियंस, उनमें चीजें ये करें कि ओके, नो मैटर लाइफ इज गोना बी टफ एंड हार्ड, टेल देम द रियलिटी एंड ट्रूथ, दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन इन दैट कंफर्टेबल जोन, बट दे हैव टू फेस इट एंड दे आर वर्थ फेसिंग इट. सबसे बड़ी बात ये है कि दे हैव दैट स्ट्रेंथ, उनको ये बताएं. अब कुछ पॉइंटर्स अगर मैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो नंबर 1 वही कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई टॉक अबाउट इट, यूजुअली पेरेंट्स हमें आके कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता. आई टू एम अ वर्किंग वुमेन, मुश्किल लगता है, हमारे पास वाकई टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है. और आजकल जिस तरह की बिजी स्केड्यूल है, यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट देते हैं उनको क्वालिटी टाइम का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने आवर्स दे रहे हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फॉर एग्जाम्पल में 10 मिनट्स 30 मिनट्स आप दे रहे हो, हाफ आवर दे रहे हो अपने बच्चों को दिन में, लेकिन आप उस हाफ आवर में उन बच्चों के साथ मेंटली एंगेज कर रहे हो, आप उनके प्रॉब्लम सुन रहे हो. एक्टिव लिसनिंग अगेन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे भी मुस्कान ने कहा कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली बीइंग हर्ड वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, द बिगेस्ट थिंग शी कुड हैव. तो वो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली पेरेंट्स के पार्ट पे, कि सुन ले. उनको जैसे भी लगे कि वो बच्चे का प्रॉब्लम बहुत ही आम सा है या it's not disturbing, सुन ले. It's important to get heard, no matter at what stage of life you are. Then जैसे मैंने कहा quality time, then very important, parents need to resolve their own issues first. आप बच्चे are not the bombs, the dustbins जहाँ पे आप जाके अपने सारे इमोशनल इश्यूज थ्रो करते हैं. जो यूजुअली होता है कि पेरेंट्स के अपने बहुत इश्यूज होते हैं, उनके अपने बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स उनके कहीं पास्ट में होते हैं, और वो उनके बच्चों पे निकल रहे होते हैं. इफ यू थिंक you are having any such problem, you are vulnerable to any such problem, please seek help, please seek therapy, until वो आपके बच्चों को और फिर आपकी जनरेशंस को आके जाके वो डिस्टर्ब करें. क्योंकि ये आपके अंदर अगर एक डंप क्रिएट हो गया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करी हैं, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटीज, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों पे और आपकी जनरेशंस पे रिफ्लेक्ट होगा. तो पेरेंट्स अपनी इमोशनल, अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें सबसे पहले, ताकि वो बच्चों को उसका निशाना ना बनाएं. बच्चों की देन अगेन बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने, बिकॉज पेरेंट्स से बढ़ के कोई सपोर्ट सिस्टम उनका नहीं हो सकता. इफ आई टॉक अबाउट प्रिसाइजली अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स, आई वुड से देन कि टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक वही बात है, कंपैटिटिव एनवायरनमेंट की बजाय एक इंकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करें. इवन इफ दे आर ट्विन्स, दे कांट बी द सेम वे. दो साथ, मतलब आई मीन इफ दे आर टू फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स व्हाटसोएवर, दो भाई हैं बहन, दोनों सेम नहीं हो सकते. दोनों की अब रिसेंटली मैं क्लाइंट देख रही हूँ, तो मदर इज कंपेयरिंग her own daughter a lot with her own younger daughter. So वो कल वो अच्छाई के लिए देंगे, of course no mother wants कि बच्चों में कुछ बुरा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में से बच्चे में मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं. इनफैक्ट आई मीन इस हद तक ये चीजें डिस्टर्ब कर जाती हैं. सो टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स पे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करें. मेंटल हेल्थ को फोकस करना चाहिए टीचर्स को. आई मीन दे नीड टू integrate such services, और उनको ये मैसेज प्रोपेगेट करना चाहिए कि mental health is important and mental health issues do arise, और उसके लिए help available है. So just referring clients for mental help is also very important. और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अपना टाइम स्लॉटिंग या चीजें मैनेज करें, दे गेट इनटू अ न्यू लाइफ, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को मैनेज करें, सो दैट दे कैन हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ एंड बेटर लाइफस्टाइल. Thank you.
Thank you, everyone. Thank you, Ms. Rakia, for the detailed answer. And with this, since we are running short of time, with this, we come to the end of today's session. I'm very grateful to our honorable guests for being part of today's conversation and educating our audiences. To the viewers, thank you very much for joining us again, and I hope to see you all next week. Allah Hafiz, and have a great weekend. Thank you, everyone. Thank you.